April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you.
We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly
large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps, and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover.
So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Jihad class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35
to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired, and some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasroor air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you.
And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargodha airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. And we have stuck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on. Same here. Next. Rahimyar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and the same, you see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. Next. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was
to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent
to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the 3 DGMOs. Right. I got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimudyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the 2 DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then,
there have been certain violations of this ceasefire understanding. And of course, after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan Army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian Army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have just one no line, multiple sir. questions, please. Sir, all right. And since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation, can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit, okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been,
It is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. Yeah, I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147. I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147. Start, please. Hi, sir. Good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his... Here's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan Army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan Army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anuvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir.
Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. You know, as far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. You know, he said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review, and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive. Yes. 163. I'll go back this side now. Yeah, 255. She said middle wale kya karenge, so 255. Oh, sorry. Good evening, sir. I'm Shailesh from National Defense. Please allow me, first of all, to pay my gratitude for protecting us Indians. Thank you very much. Sir, since the enemy has been talking about taking down our aerial platforms, it would be deemed fit in case we can reveal that we have taken down their fighter jets. What could be the number? Though you said that they may be not good to reveal the platforms, but since this has come from various quarters in Pakistan, so I believe that we need to answer, in case if you can, sir, if you may allow. The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they, please don't ask. Were they four generation plus, sir? No, see, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Thank you so much. All right. Yeah, 163. सर मैं मंजीत नेगी हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्या नंबर्स कुछ बता सकते हैं कितने आतंकी मारे गए? कुछ नाम सरकार मतलब कुछ नाम मीडिया में आए भी हैं जो बड़े उसके मास्टरमाइंड थे। और एक सवाल जो आज एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सरकार की तरफ से भी कहा गया। और पिछली बार जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी उसमें वो लिस्ट दिखाई गई थी कि 21 टेरर कैंप आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो क्या जो बाकी बचे हुए टेरर कैंप उन पर भी कार्रवाई होगी? और एक नंबर अगर आप बता पाएं कितने टेररिस्ट मारे गए? सर बिफोर यू आंसर, बिफोर यू Manjeet ji, 3 questions. The third one has just been asked here before. So 21 this thing. So I'll request the first to be answered so that we have more number of people who can ask. मंजीत, जब मैंने स्टेटमेंट दिया तो मैंने शुरू में ही कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर एंगेज किए जाएंगे।
लेकिन मैंने बताया कि इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। मैम, सर, नेक्स्ट इज फ्रॉम 17। सर, मेरा नाम अंजू निर्वाण है, TV9 भारतवर्ष से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो इंडियन नेवी है उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की उसकी भूमिका रही, क्योंकि हमने इस दौरान सर देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन भी रही और ये बोला गया कि कराची तक हमारी नेवी ने ऑपरेशन किया है। तो सर इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। और सर हमने कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट डाउन किए हैं, अगर उसका भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। आई विल मेक फ्यू सेंटेंसेस and leave it for your imagination. First of all, as I mentioned, we have quantitative and qualitative edge to deliver a massive blow to our adversary, and we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. Okay. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं। आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। So at this time we'll just let it be. Okay, ladies and gentlemen, we have 1 or 2 more questions, sir. So please, they are going to be outside. You can speak to them there also. 104. I think. Yeah, ask, sir. Sir, Dinakar with the Hindu newspaper. Are you surprised that you got this question? No, sir. I'm waiting for this to look. Sir, can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on, international media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that, because we are still in a combat situation. And if I comment
on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. Okay, hold, please don't, please be civil here. So we'll have 220 now. हेलो सर, दिस इज़ अनीता चौधरी सर फ्रॉम स्वदेश न्यूज़पेपर। मेरा सवाल है, क्योंकि ये हमारे जो पहले जो एक्शन रहा वो आतंकवाद के खिलाफ रहा, तो आतंकवाद में अजहर मसूद की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे और जहाज जहाज रुलाएंगे। तो क्या अगला, अगर खुदा न खास्ता अगला टेरर अटैक किसी भी तरह का होता है, तो क्या उसे एक्ट ऑफ वॉर में हमारी तरफ से लिया जाएगा और उसका क्या माकूल जवाब दिया जा सकता है? मेरा इसमें सिर्फ एक ही जवाब है आपके लिए कि हमने अपनी कार्रवाई करी। हमने उसके बाद मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया कि ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि हमने इस तरीके से ये जो स्ट्राइक्स हैं वो क्यों की। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है उसने जैसे मुनासिब समझा वो कार्रवाई करी। तो आपने देखा कि ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायोलेशंस, आपके एक साथी ने सवाल पूछा था शुरू में, एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। सर मैं एक सवाल इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, 1 मिनट। जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. Okay, now as per the, please, we'll have 166 and 25 and after that no more please. Sir, this side. Ladies and gentlemen, please maintain, I request you to please be quiet. Jal gayi? No. This side, sir. We have only two questions left. 166. Yeah, please ask. So I'm Rahul Singh from Hindustan Times, sir. So you were totally on top of the game in the kind of losses you've inflicted on the enemy. I mean, we saw the slides and everything. So it kind of comes across that you were batting it 99 and you decided to declare your innings. What are your thoughts on that, sir? And do you think, are you weighing the option of the Pakistan army using this time, buying this time of the so-called ceasefire or the understanding? And you talked about how they could not be trusted. So buying time to kind of build up their war reserves, getting stuff from their friends like Turkey or China, are we considering that possibility, sir? Look, see, the call came from the Pakistani side to speak about cessation of hostilities. What pauses mean during such conflicts is known to everybody. You know, I don't want to go into the pros and cons of how preparation for war is made. You know, that is a process in itself.
But I think my senior colleague here, the DG Air Operations, spoke, or he alluded at least, to what this operation was precisely and specifically meant for. And I think that's something that we achieved, right at the outset. Had we had the option not to go further, we probably wouldn't have. But we've been compelled to be in this situation. And as you've seen, the armed forces of India, and you've got the 3 Director Generals sitting here, we are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. That's the contention that I want to make here today. Ma'am, please. Okay, the last question, and ma'am, 25. She has been asking since the first one. Sir, I'm Nandita. Sir. She's not asking a question. Sir, I'm Nandita Dagar, DAGAR from DD News and DD India. Sir, I wanted to ask you that my question is to General Ghai. Sir, you spoke to your counterpart yesterday and the Pakistani counterpart. Sir, what is the Indian Army's assessment that despite that agreement, that talk that you had, despite that agreement coming into effect at 1700 hours yesterday, why did they violate it? And number 2, yesterday at the Joint Defense Ministry and Foreign Ministry briefing, Wing Commander Vyomika Singh and Colonel Sophia Qureshi had told us that we have cited the Pakistani troops amassing at the borders and at the LOC. Sir, has that situation changed? Have they withdrawn? And sir, if in case, despite now there is a lull, of course, but if tonight again, if the enemy again carries out shelling and aerial intrusions through drones, what is going to be our response, sir? Thank you. So, without outlining the specifics of that response, I've already made it clear that there will be a response, and it will be fierce and it will be punitive. Why the Pakistan Army chose the option of violating the understanding that was arrived at earlier yesterday, I think that's a question that we best answered by the Pakistan DGMO. I wouldn't be able to, give you that. But, in situations such as these, and if you go back into any conflict, sometimes these understandings take time, to fructify and manifest on ground. But without, getting into the reasons, it is our mandate to be prepared at all times, and that we were. It's not as if because there was an understanding we weren't prepared. I must tell you that the armed forces were on a very, very high alert, and they continue to be in that state even as we speak. Oh, all right. Ladies and gentlemen, please, ma'am, please. Okay, thank you so much for coming today. Those who have missed asking a question, those who have missed, see, I knew I'll grab this attention from you like this. Those who have missed the opportunity to ask a question can give me a written one. I'll definitely get back to you with that. And also, they are they are invited for a cup of tea in my office day after tomorrow. Thank you, ladies and gentlemen, for coming. Thank you. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind. तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, एयर मार्शल AK भारती और वाइस एडमिरल AN प्रमोद की साझा ब्रीफिंग में ये सारी जो बातें हैं सामने आई हैं। अभी भी फ्रंट पर आर्मी कमांडोज को फुल अथॉरिटी दी गई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का भी वायलेशन होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ मौजूद हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास चलते हैं। उमा, बहुत सारा ब्यौरा, बहुत सारी जानकारियां बारीकी से क्या हुआ उन 3 दिनों में सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी खबर तो यही कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त भी जारी है। उमा।
जी बिल्कुल, देखिए सिक्ता ब्यौरेवार तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को और पूरी जो डिटेलिंग है वो दी गई भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा। अब साफ तौर पे ये कहा गया कि जो टेरर कैंप पे 7 मई को हमला किया गया उसको किस प्रिसाइज तरीके से हमला किया गया, और उसके अलावा न सिर्फ वो हमला बल्कि साथ ही साथ जब 9 मई को जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया भारत के ठिकानों पर उसको कैसे नाकाम किया गया, और उसके बाद किस तरीके से जो पाकिस्तान के एयर बेसेस हैं उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुँचाया गया, वो तस्वीरें भी इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई गई। तो भारत ने जो एक सैन्य तरीका अपनाया पाकिस्तान के आतंकी कैंप को नष्ट करने का, और उसके बाद भारत ने ये एक ऑप्शन दिया था पाकिस्तान को 7 मई को ही डीजीएमओ के ज़रिए कि वो बातचीत करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की इत्तला जो है वो पाकिस्तान को डीजीएमओ के ज़रिए दी गई थी कि भारत ने इस अभियान को अंजाम दिया है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं, न कि सैन्य या नागरिक ठिकाने। इस बात को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार साफ किया गया कि जो पहला 7 मई का जो हमला था वो उसका मकसद किसी भी तौर पर पाकिस्तान के सैन्य या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि जब इसके एवज में पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू हुए 7 मई की रात से 7 मई, 8 मई और 9 मई की रात को, तो जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने जो है वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन सैन्य ठिकानों पर काफ़ी जो तबाही है वो मचाई। तो ये जो जानकारी है उसको विस्तार के साथ रखा गया, कई वीडियो क्लिप्स भी जो हैं वो दिखाए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं जो कि जिन्होंने कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से कवर किया है। राजीव, इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पूछा गया कि क्या भारतीय सेना ने कोई विमान खोया है तो उसका भी जवाब निकलकर सामने आया, वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय ने वायुसेना का कोई विमान गिरा है कि नहीं गिरा है या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई है कि हमने जो टारगेट जो दिया गया था, हमें सरकार जो टारगेट दिया गया था टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने का, बर्बाद करने का, हमने उस टारगेट को अचीव किया और हमारे जो पायलट हैं वो हमारे पास सुरक्षित है। तो ये, और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह भी बताई कि अभी ये ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे मौके पर कई चीज़ों का ऑपरेशनल डिटेल का खुलासा करना ये अपने आप में ठीक नहीं है, मनोबल को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर उसका कम से कम एनिमी को यानी दुश्मन को फायदा ना पहुंचे। तो बहुत नपे तुले अंदाज में जो ऑपरेशन चल रहा है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित है, हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात है कि जब कॉम्बैट ड्रिल में आप होते हैं, जब लड़ाई के मैदान में होते हैं, बिल्कुल वार लाइक सिचुएशन होते, तो क्या खोया क्या पाया ये मैंने जी बिल्कुल। और इसलिए ये सवाल अहम है राजीव, ये इसलिए सवाल अहम है क्योंकि बहुत तरह की शंकाएं, बहुत तरह के भ्रम और बहुत तरह की जो भ्रांतियां हैं वो फैलाई जा रही हैं। और जब सेना के अधिकारी आज सामने थे तो उनसे सीधा सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया और राजीव ने बताया, और ये जवाब दर्शकों तक पहुँचना इसलिए लाजमी है क्योंकि तमाम शंकाओं और तमाम भ्रम पर जो है वो एक लगाम लगे। दूसरी अहम बात राजीव, कि इसमें जो वीडियो क्लिप्स दिखाए गए और पाकिस्तान के जो बेसेस हैं उस पर किस तरह से तबाही मचाई गई वो भी डिटेलिंग दी गई, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान के एक नहीं कम से कम 4-5 जो एयरफील्ड हैं, पहले उसकी क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। जैसे सरगुदा की बात करते हैं, चकलाला की बात करते हैं, वो सारे वीडियो क्लिप के जरिए दिखाए गए, बाकायदा सबूत के साथ दिखाए गए कि भारत के जो वेपन सिस्टम थे, हालांकि वेपन का नाम नहीं बताया गया, नई एयरक्राफ्ट का नाम बताया गया, लेकिन बताया गया जो टारगेट दिए गए थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ में यह भी बताया गया कि जो एयर डिफेंस सिस्टम थे पाकिस्तान के, एयर डिफेंस सिस्टम वो जी एक सिस्टम होता है कि अगर दुश्मन देश से कोई अगर बॉम्ब आ रहा है या रॉकेट आ रहा है या किसी तरह का हमला हो रहा है तो आपको पहले पता लग जाता है, आप ट्रैक कर सकते हैं। तो वो सारे सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। पाकिस्तान के जितने मेजर एयर बेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरा तबाही का, और उसकी तबाही की जो तस्वीर है वो भी दिखाई गई। सिक्ता, एक अहम बात आपको ये भी बताएंगे कि आज जो ये ब्रीफिंग हुई है सेना की तरफ से, उसके पहले एक और ब्रीफिंग हुई है बैकग्राउंड में, और उसमें जो जानकारी दी गई और यहाँ जो जानकारी दी गई, दोनों में एक कोलैबोरेशन है, एक कोलैबोरेशन है। और जो जानकारी दी गई हमें वो ये कि जब 7 मई को हमला किया गया था उसके बाद पाकिस्तान को इस बात की इत्तला दी गई थी कि चाहे तो बातचीत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमले का रास्ता चुना।
और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पे हर रात जब पाकिस्तान की तरफ से हमला होता था तो भारत की तरफ से उससे ज़्यादा बड़ा जो है वो ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो हमला किया जाता था। और 9 मई को जब बेसिस जिस पर कि हमले हुए और जिसकी की तस्वीरें दिखाई गई इस ब्रीफिंग में, जो क्या तबाही वहाँ पे मची, और जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि उसके बाद ही पाकिस्तान सहमा और बातचीत की टेबल पर DGMO के जरिए आया। तो ये थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालिए कि किस तरह की वो तबाही मची थी जिसका दृश्य यहाँ पे दिखाया गया, और ये भी कि जब उधर से हमला हुआ तो कैसे उसको नाकाम किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फोर्सेस के लोगों ने कहा कि जो पहलगाम त्रासदी हुई थी उसके बाद उनको टास्क सौंपा गया कि उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो टेररिस्ट कैंप है उनको तबाह करना था। 9 टेररिस्ट कैंप जो हैं तय किए गए, और सबसे बड़ी बात है जो बहावलपुर और मुरीद के उस टेररिस्ट कैंप को हिट करना। मुरीद के बहावलपुर की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब सबसे ताकतवर प्रांत माना जाता है, और उसके विजुअल दिखाए गए कि पहले उस कैंप की स्थिति क्या थी, अब कितने थे, और जो बताया गया कि जो 9 जो टेररिस्ट कैंप है वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, और कितने आतंकी मारे गए, 100 के करीब आतंकी मारे जाने के खबर कितने बड़े थे कि उसके जो अंतिम संस्कार हो रहे थे जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई सारे अफसर आए हुए थे, और वो जो पाकिस्तानी झंडा एक राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है विदा किया गया। तो समझा जा सकता है कि जो, और सबसे बड़ी फोर्सेस के इस बात का सुकून था उनको, और इस बात का गर्व था कि हमने जो टारगेट दिया गया था हमने उसको अचीव किया। हाँ। और सिर्फ इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि ये जो टारगेट चुने गए थे वो बहुत ही एक तयशुदा तरीके से चुने गए थे, और इसके जरिए जो ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो 3 लक्ष्य उसके रखे गए। एक सैन्य लक्ष्य था, दूसरा लक्ष्य जो था राजनीतिक था, और तीसरा जो था मनोवैज्ञानिक था। तो जो राजीव बता रहे हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है और जो हमें जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया कि सैन्य लक्ष्य तो ये था कि जो इस तरह के कैंप हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था पाकिस्तान में कि ऐसे कैंप को अटैक करेंगे, बहावलपुर, मुरीद के या मुजफ्फराबाद, वहाँ पे जो मुख्यालय हैं आतंकवादियों के, उनको टारगेट किया गया। पॉलिटिकल जो गोल था वो ये था कि जिस तरह से सिंधु नदी को एवेंस में रखा गया, यानी कि जो आतंकवाद की जो कीमत है वो पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा चुकानी पड़े, और जो मनोवैज्ञानिक जो उसका फैक्टर था वो ये कि आतंकवादी कहीं भी पाकिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, इसलिए ऐसे ठिकानों को चुने गए। राजीव, जो आज आर्मी की जो ब्रीफिंग हुई है ये पहली बार इस तरह से खुल के ब्रीफिंग हुई है जिसमें कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स भी जो है दिए गए। आपको क्या लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात जो बताई गई वो क्या बताई गई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये बताई गई, मुझे जो लगता है कि सेना का कहना ये था कि पिछले 4 दिन से जो कुछ चल रहा था वो जस्ट लाइक वार की तरह था। एक लड़ाई के मैदान में बिल्कुल कुछ वैसा ही होता है, और बिल्कुल उसी तरह की तैयारी थी। हम लोग, हालांकि वार डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार उसके फाइटर या उसके जो मिसाइल जिसको कह सकते हैं वो भारत के एरिया में अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क इतना ताकतवर था कि उनको घुसने नहीं दिया। भारतीय सेना को यह भी आशंका था कि जिस तरह से LOC पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी भी घुसपैठ करने के फिराक थी। पहले आतंकियों को घुसपैठ कराते थे और अब पाकिस्तानी आर्मी में घुस सकते थे, और मे भी कुछ करने का उनका इरादा हो, लेकिन उनके सारे इरादों को भारतीय सेना ने विफल कर दिया। सेना का यह भी कहना है कि हम कल जो 12 बजे बातचीत होगी DGM लेवल पर, आज के दिन हम पूरा इंतजार करेंगे, रात देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या होता है क्या नहीं होता है, और साथ में इन सारे आर्मी कमांडरों को एक सीधा निर्देश दिया गया। जी, एक सवाल मेरा राजीव से है, एक सवाल मेरा राजीव से है। भारतीय नौसेना अभी भी अरब सागर में तैनात है, और ये एक एज है भारत के लिए, एक डोमिनेटिंग फोर्स है, जैसा कि अधिकारियों ने इस साझा ब्रीफिंग में बताया है। जी राजीव, सिक्ता का आपके लिए सवाल है कि जो भारतीय सेना है वो अभी भी अरेबियन सी में है, और वो एक एडवांटेज है एक तरह से रणनीतिक तौर पर। बिल्कुल एडवांटेज है, और सबसे बड़ी बात है कि नौसेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी नौसेना जानती है कि अगर उसने हरकत किया तो उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना का यह भी कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कल तक हम देखेंगे पाकिस्तान क्या हरकत करता है क्या नहीं करता। अगर कोई उल्लंघन करता है, जो सहमति बनी है, तो सेना प्रमुख का सीधा निर्देश है कि सेना को जो लगता है, यानी जो ग्राउंड लेवल पर कमांडर हैं, वो अपने हिसाब से उचित निर्णय ले सकते हैं। यानी गेंद पाकिस्तान के पाले में है, वो शांति चाहता है या फिर जो चाहता है कि फिर से भारतीय सेना सबक चुका है। और भारतीय सेना का यह भी कहना है कि फिलहाल हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन अगर मौका आएगा तो और बाकी बचे हुए आतंकी ठिकाने हम उसको भी बर्बाद कर देंगे।
जी सिक्ता, इसमें ये बात जोड़कर आपके पास वापस आएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब बैठक की थी और कहा था कि सेना को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो ठिकाना जो है, लक्ष्य जो है और समय जो है खुद चुने, तो जिस तरीके से लक्ष्य चुना गया, जैसे उसको तबाह किया गया, इन सभी बातों का ब्यौरा दिया गया। लेकिन इसमें आखिरी ये बात कि इस पूरे ये सब कुछ जब चल रहा था, भारत जब अपनी रणनीति बना रहा था, तो दुनिया के कई देशों का ये दबाव भी आ रहा था या सलाह भी आ रही थी कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन 7 तारीख को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद दुनिया के देशों को ये साफ कर दिया कि भारत इस बार आतंकवाद को लेकर बिल्कुल फर्म स्टैंड लेकर चल रहा है। उधर से गोली आएगी तो उधर से गोला मारेंगे, और उसी एक आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द सारी रणनीति बुनी गई, और जिस तरह से वहाँ से हमले हुए उसी हिसाब से, उसी मुकाबिल उसका जवाब दिया गया। और नतीजा सामने है कि आखिरकार पाकिस्तान को बातचीत के टेबल पे डीजीएमओ के जरिए, डीजीएमओ चैनल के जरिए आना पड़ा। उसके बाद शांति स्थापना की हुई शुरुआत। हालांकि कुछ सीज फायर उल्लंघन जरूर हुए हैं, लेकिन अभी कमोबेश आज सुबह 5 बजे के बाद से शांति बनी हुई है। लेकिन अभी भी जैसा कि इस ब्रीफिंग में बताया गया उमा, कि अभी भी आर्मी कमांडर्स को ये अथॉरिटी दी गई है, फुल अथॉरिटी दी गई है कि अगर कल शाम की तरह किसी तरह का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल राजीव, इसमें अपनी बात जोड़ेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि सिक्ता का ये सवाल है कि अभी भी कमांडर्स को ये निर्देश है कि कुछ भी उधर से हमला हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। ये बातें जो हैं वो राजनीतिक तौर पे बिल्कुल साफ कर दिया गया है, साफ निर्देश दिया गया है। और राजीव, इसमें इस पीसी में इसके बारे में क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया और सेना द्वारा हम लोग को जानकारी भी दी गई कि जो एक सहमति बनी, कल जब सहमति बनी कि शाम 5 बजे के बाद से दोनों देश जो है कोई सैन्य कार्रवाई सीमा पर नहीं करेंगे और गोलाबारी नहीं होगी, उसके बाद आज बैठक होता है। जितने आर्मी कमांडर हैं सेना प्रमुख के साथ बैठक होता है, और उसके बाद सेना प्रमुख जो है आर्मी कमांडर को सीधा निर्देश देते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ जो सहमति बनी है और उन शर्तों का अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो आप उसे माकूल जवाब दीजिए, जिस भाषा को समझता हो उसी भाषा में जवाब दीजिए। और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डीजीएमओ ने साफ तौर पर कहा कि जो ग्राउंड में जो कमांडर हैं उनको सीधा निर्देश दिया गया है। हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान कल तक जो 12 बजे का समय है, उसके बाद हम जब बातचीत पर बैठेंगे, बातचीत जब करेंगे तो उसके बाद मॉडलिटी तय होती है। अगर पाकिस्तान अगर उन शर्तों का लगातार उल्लंघन करता रहता है तो ग्राउंड में जो फोर्सेज हैं बिल्कुल करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान को एकदम कह सकते हैं कि मुंहतोड़ जवाब पहले की तरह यहाँ भी देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है राजीव आपसे, क्योंकि हमें विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग होती है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है, राजनीतिक तौर पे भी ये बयान निकलकर सामने आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। सेना के लिए इसका क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सेना के लिए सीधा मतलब ये है कि हमने जो अपने हथियार वेपन सिस्टम निकाले थे या जो अलर्टनेस के लेवल है वो एज इट इज़ बरकरार है। पाकिस्तान की ओर से जैसे कोई हरकत होगा हम उसका करारा जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अब टाइम नहीं लेंगे। जैसे पहले शुरुआत में जब कहा गया था कि जब पहलगाम त्रासदी होता है, सैलानियों को हत्या किया जाता है, उसके बाद हमने सेना ने टाइम लिया, समय अपने हिसाब से चूज करने के लिए, टारगेट और ठिकाने तय करने। लेकिन अब हमें किसी चीज़ के समय नहीं चाहिए। सेना पूरा अलर्ट है, कह सकते हैं कि वार लाइक सिचुएशन, जिसको सेना ने कहा कि 4 दिन इसको लड़ाई की तरफ देख सकते हैं, और सेना इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान अगर कुछ भी गलती करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रियल टाइम जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाएगा। देखा हमने कि कैसे 14-15 दिनों का टाइम लगा, उसमें कुछ सूचनाएं जुटाई गई, कुछ टारगेट सेट किए गए, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ एकदम रेडीमेड है, तैयार होगा। जैसे वहाँ उधर से गोली आएगी, इधर से गोला जाएगा। सिक्ता, आपका कोई और सवाल है राजीव के लिए या मेरे लिए? जी, इस ऑपरेशन के कई जो आपके सूत्र बता रहे थे कि इसके कई मायने हैं और इसके कई हासिल भी हैं, आप सिलसिलेवार तरीके से अगर बता सके उमा शंकर कि इस ऑपरेशन के क्या क्या हासिल रहे हैं अभी तक, अब जब पूरी कार्रवाई के बारे में ब्यौरा सबके सामने है, देश के सामने है। जी देखिए, सिलसिलेवार ढंग से जो हमें बताया गया वो ये कि जो पहलगाम का जो आतंकी हमला है उस हमले को बिल्कुल अलग तरीके से लिया गया। हालांकि दशकों से भारत के ऊपर आतंकी हमले होते रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद ये तय कर लिया गया कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और पहली बार जब सऊदी अरब में जब प्रधानमंत्री मोदी थे तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन आया था, और वो जो फ़ोन था वो तो संवेदना जताने के लिए था, लेकिन उसके बाद से ही भारत ने जो रीच आउट करना है वो शुरू कर दिया और कैसे पाकिस्तान से तार जुड़े हैं वो बताना शुरू कर दिया। मैं अब
छोटे में बताना चाहूँगा आपको, बड़ी लंबी ये जो हमें ब्रीफिंग मिली थी, लेकिन जो ऑपरेशनल पार्ट है उसका ये कि 1 से 6 मई के आसपास लोग ये पूछ रहे थे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तब तक भारत जो है वो उनको बता रहा था कि हम जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे। 7 मई को भारत ने बता दिया कि क्या तरीका उसने अपनाया और कैसे इतनी सतर्कता के साथ और इतने खास तरीके से टारगेट चुना, जो कि सेना का कोई छोटा मोटा कैंप नहीं था, मुख्यालय था, वो भी जैश का, लश्कर का। तो इस तरह के मुख्यालयों पर हमला करके उसने एक सैन्य मकसद हासिल किया। दूसरा जो मकसद है पॉलिटिकल मकसद है, और जो डिप्लोमेटिक तरीके से जो उसने हासिल किया वो ये कि सिंधु नदी समझौते को एबेंस में रखा ताकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद की कीमत जो है ज़्यादा बढ़ जाए। और तीसरा जो मनोवैज्ञानिक जो लक्ष्य हासिल किया गया या आगे किया जाएगा वो ये कि कोई भी आतंकी तंजीम जो है या उसको संरक्षण देने वाला ये ना सोचे कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में वो सुरक्षित है। तो इन 3 मकसद के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इसका जो अंतिम परिणति जो हुई वो 9 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक वो जो एक पूरा जो एक प्रकरण जो घटनाक्रम बीता वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 9 मई की रात को जेडी वेंस का फ़ोन आता है प्रधानमंत्री मोदी के पास और वो जानना चाहते हैं कि क्या तरीका, क्या उपाय हो सकता है। भारत ने जो है वो साफ तौर पे कहा कि गोली आएगी तो गोला मारेंगे, और वो एक छोटा सा एक नमूना था, ये एक छोटा सा संकेत था कि कैसे निपटेंगे। पाकिस्तान ने गलती क्या कर दी कि 9 तारीख की रात को उसने 14 ऐसे ठिकानों पर हमले किए, जो कि हालांकि वो हमले नाकाम कर दिए गए। उसके बाद भारत ने उन ठिकानों पर हमले किए जिसके दृश्य जो है आज इस ब्रीफिंग में दिखाए गए, और वहाँ पे तबाही मची और तब जाकर पाकिस्तान सहमा। 7 मई को जो भारत ने कहा था डीजीएमओ के जरिए कि आप आइए बात कीजिए, उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन 10 मई को डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से तकरीबन 1 बजे के आसपास फ़ोन कॉल आया। 3:30 बजे बातचीत हो पाई दोनों डीजीएमओ के बीच, और उसके बाद ये इस समझौते तक पहुँचा गया। तो दोनों देशों के बीच डीजीएमओ के स्तर की द्विपक्षीय बातचीत के बाद इस सहमति तक पहुंचा गया। और इसके पहले पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका के भी दरवाजे खटखटाए, वहां से भी मदद मांगी, और तभी वहां के जो मार्को रूबियो विदेश मंत्री हैं उन्होंने आसिम मुनीर से बात की थी। और उसके बाद ही पाकिस्तान जो है ये समझ गया कि भारत का जो रुख है वो गोली आएगी तो गोला मारेंगे। तो ये अमेरिका के जरिए भी पाकिस्तान को इस बात के पूरे जो संदेश हैं वो दे दिए गए। तो ये पूरा एक प्रकरण था छोटे में। इस तरह से पर्दे के पीछे से या जो सामने दिखा, उसके साथ साथ पर्दे के पीछे किस तरह की रणनीति बनी और कैसे इस पर अमल किया गया, ये तमाम बातें सूत्रों के हवाले से सामने भी आई, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने सामने से बताया उस तौर पर भी सामने आई। चिकता, धन्यवाद आपका उमा शंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास पेशकश ऑपरेशन सिंदूर का क्या हासिल। भारत पाकिस्तान के बीच समझौते के बाद तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर हुए और काफ़ी विस्तार में बताया गया कि किस तरह का ये ऑपरेशन रहा। 35 से 40 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की, उसे पता है कि भारतीय सेना क्या करेगी। 9 आतंकी ठिकाने इसमें तबाह हुए हैं और पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम किए गए हैं। तो एक बार सबसे पहले शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बातें हैं वो क्या रही हैं। आइए सुनते हैं। We achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical
target system analysis. We analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. सीज़फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, वो स्पेक्यूलेटिव जोन में आ जाता है और मैं स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक सिचुएशन अलग होती है और उससे एक तरीके से डील किया जाता है। We are always prepared to face any eventuality. And like I said, that's for the sovereignty, the territorial integrity, and the safety of our citizens. So whatever has to be done will be done. You know, I'm not so concerned about what Pakistan will do in this time. I'm only concerned about what we will do. We have a roadmap and a plan, and we will follow it diligently, and we will follow it to the T. Our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स और आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। So our aim is to maintain peace and tell our adversary that you do this and the response will be bloody. तो सेना के तीनों अंगों की ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें विस्तार से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हासिल किया गया। एक बार आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का हासिल क्या रहा। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए। ये लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी ठिकाने थे। पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान के बहावलपुर में स्ट्राइक किया गया। बहावलपुर में अमेरिका भी ड्रोन भेजने की हिम्मत नहीं कर पाता। पाकिस्तान एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। भारत के साथ खड़े हुए दुनिया भर के देश, ये रहा भारत का हासिल इस ऑपरेशन सिंदूर का। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि भारत का संदेश क्या है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। संदेश साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। तीनों सेनाओं ने साथ आकर किया ये ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान के 35 से 40 आतंकी इसमें मारे गए हैं। इस ऑपरेशन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कड़ा संदेश दिया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कड़ी चेतावनी के साथ कि अगर गोली आएगी तो गोला मारेंगे और भारत विरोधी गतिविधि जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 मई को भारत और अमेरिका का संवाद हुआ है। जेडी वैंस का फ़ोन 9 मई की रात को आया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैंस से पूछा कि और क्या हो सकता है। पीएम मोदी का साफ संदेश था कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के साथ। दुनिया को भी संदेश दिया गया। भारत पाकिस्तान संबंधों में ये न्यू नॉर्मल, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इसमें इस वक्त जो तीनों सेना के अध्यक्षों जो 3 अंगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये तमाम बातें एक बार फिर से बताई गई हैं कि इसका मकसद क्या क्या था। 3 बड़े मकसद रहे कि सैन्य जो ठिकाने थे उनको, जो आतंकी हेडक्वार्टर्स थे उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो राजनीतिक इसके भी मकसद थे।
और साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए मनोवैज्ञानिक तरीके से भी एक जीत हासिल की गई है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, राजीव रंजन और उमा शंकर सिंह। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कैप्टन आलोक बंसल स्टूडियो में, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। इसके साथ ही जे के त्रिपाठी हैं, जो पूर्व राजदूत हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ। कैप्टन याशिका एच त्यागी हैं, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर। और एडमिरल सुरेश ग्रेवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। आलोक बंसल जी, यहाँ पर इस वक्त हमने देखा है कि एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और क्या हासिल हुआ इसको हम 3 मोटी कैटेगरीज में डाल सकते हैं कि सैन्य तौर पे क्या हासिल किया हमने, राजनीतिक तौर पर क्या हासिल किया हमने, और साथ साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या हासिल किया हमने। तो जो सैन्य तरीके, जो मिलिट्री ऑपरेशन रहा, उसके ज़रिए जो यहाँ पर क्या हासिल हुआ है, अगर उसको हम संक्षेप में एक बार फिर जाने कि कैसे आतंकी ठिकानों को निशाना लगाया गया, बिल्कुल प्रिसिशन से ये निशाने हुए और हमने बड़े पैमाने पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। देखिए, इस जो सैन्य तौर पे हमने हासिल किया उसमें 2-3 चीज़ें बहुत मुख्य हैं। एक तो पहला ये कि हमने जिस तरीके से 9 आतंकी ठिकाने जहाँ पे कि प्रशिक्षण होता था, जिन्हें आतंकवाद की नर्सरी कहा जा सकता है, जहाँ उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको नष्ट किया। और उसमें बहावलपुर जैसी जगह थी जो करीब 100 किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा दूर भारतीय सीमा से थी, और ये सब हमने ऐसे किया कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस किए। तो ये एक बहुत बड़ी क्षमता थी जो इससे पहले हमने नहीं दिखाई। दूसरा, फिर उसके बाद जब हमने हवाई अड्डों पर हमला किया तो आपने देखा सरगोधा में क्या हुआ, सियालकोट में क्या हुआ, नूर जो इनका एयरबेस है जो रावलपिंडी में है उसमें क्या हुआ, और बड़ी संख्या में इनके जो वायुसेना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त किया गया। और एयर डिफेंस जो इनका सिस्टम था लाहौर का, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, कई जगह उसको सैचुरेट किया गया। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो ये था कि इसमें हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, विशेषकर जो देश में स्वदेशी जो आकाश मिसाइल सिस्टम था, उसने बहुत सफलता प्राप्त की और उसने दिखा दिया। क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो हमास की तरह जो है इंडियन एयर स्पेस को ड्रोन से सैचुरेट कर दे। उसने बहुत सारे सैकड़ों ड्रोन से एक साथ भेजने की कोशिश की, पर कोई भी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाया। और उनको हमारी जो और ज़्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया गया। पंजाब प्रांत में भी हमने देखा कि 200 के करीब ड्रोन्स आते रहे, उनको गिराया गया। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, मिलिटरीली सैन्य तौर पे बड़ी उपलब्धि क्या रही हमारी? देखो, 3-4 बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। एक तो न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्शन होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वार। ये एक जो बदलाव आ गया, इसका मतलब पाकिस्तान के इतना डर लगेगा कि अगर कोई भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई तो पाकिस्तान को उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये मुझे साफ लगता रहा है इसके बाद कि अगर कहीं कभी भी ऐसा होता है तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। ये एक बहुत बड़ा बड़ी बात संदेश किया है। और जी, मैं इसके 2-3 पॉइंट हो रहे हैं। देखो, ये एक तो ये होगा। दूसरा जो बात हो रही थी कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का जो एक प्रकार हेडक्वार्टर था, जो एक प्रकार से नर्सरी बना है, उसको बर्बाद करना ये काबिले तारीफ है। तीसरा जो है, आपने एयरफोर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डैमेज किया है। आज ये बता नहीं रहे इनका 20% से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अश्विनी सिवाच, आप तस्वीरें देख लीजिए स्क्रीन पे और आपको भी आसानी होगी बताने में। हमले के पहले और हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। ये जैकबाबाद है, तो इसको आप एक्सप्लेन करें यहाँ क्या दिख रहा है। देख लो, अभी आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से ये पहले था और किस प्रकार से हमले के बाद है। आप देखें कि अब ये जैकबाबाद है। हाँ, और ये एयरबेस है। तो ये सच्चाई है कि इसी प्रकार से हमने 9 से 10 जो इनके एयरबेस थी उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया है। वो ऑपरेशनलाइज होने के लिए उनको काफी टाइम लगेगा और काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। और आप देखें उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है। आज तक किसी ने नहीं, 1971 की लड़ाई के बाद कहीं भी आपने इतनी अंदर जाके पाकिस्तान की एयर बेसिस को नहीं डिस्ट्रॉय। इसका मतलब आपने ये शाहबाज एयर बेस है जैकबाबाद का,
जिसको इस तरह से नष्ट किया गया है। आप देखें इसको कितना नुकसान हुआ है। अगर दाईं तरफ देखें और बाईं तरफ देखें, बाईं तरफ बिल्कुल ठीक ठाक है, दाईं तरफ देखें इनके जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हुआ, कैप्टन याशिका एच त्यागी को मैं लाना चाहूंगी, पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। अभी हमने देखा ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें डिटेल तस्वीरें दिखाई गई हैं कि क्या था पहले, क्या है अब। तो भारत ने पूरे सबूत दिए हैं, वीडियो एविडेंस दिए हैं। इससे आप अगर मुकाबला करें तो पाकिस्तान का कहीं कोई सबूत नहीं है, सिर्फ झूठ है और तमाम तरह के दावे हैं और उन दावों का कोई सबूत नहीं है। तो हम दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं। और कैप्टन याशिका त्यागी, अगर आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करें कि हमले के पहले और बाद जो है वो क्या हुआ है, तो फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। एक तो जैकबाबाद की तस्वीर है जो कि वहाँ पर शाहबाज एयरबेस है। फुल फ्रेम तस्वीर दिखाएंगे हम क्या पर हो क्या रहा है। ये देखिए कैप्टन याशिका त्यागी, जिस तरह का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, ये काफ़ी अंदर जैकबाबाद की जो महत्व है पाकिस्तान के, उसे भी बताएंगे। देखिए, ये जो आप फैसिलिटी दिखा रहे हैं, कई हमने एयर स्ट्रिप्स उनकी बर्बाद कर दी, कई हमने उनके रडार्स बर्बाद कर दिए, हमने जहां उनके ड्रोन्स लॉन्च हो रहे थे वो एरियाज के ऊपर बहुत डैमेज किया। मैं चाहूंगी आप आपके दर्शकों को वो क्रेटर्स दिखाइए जो बड़े बड़े इनके हमने एयर स्ट्रिप्स बर्बाद किए हैं। बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगता है वापस से उन एयर स्ट्रिप्स को खड़ा करने में। तो ये जो एयरफोर्स ने इतना डैमेज इनके दूसरी पिक्चर्स हैं के ऊपर किया है, ये जो दूसरी पिक्चर है कैप्टन त्यागी, शानदार पिक्चर है, इसको भी थोड़ा बता दीजिए। भोलारी एयरबेस, भोलारी एयरबेस जो ये दिखा रहे हैं आप, डेट टाइम स्टैंप के साथ में, जिससे किसी के मन में ये शक ना रहे कि ये कब की पिक्चर्स हैं। और जो ये ब्रीफिंग हुई और ये फोटोज दिखाई गई और हमारे 3 सीनियर ऑफिसर्स आकर जब वहां बैठे, आप देखिए प्रेस ब्रीफिंग इज फॉर द वर्ल्ड। ये खाली पाकिस्तान, ये खाली हमारे देश की मीडिया ही नहीं है, इसको बहुत केयरफुली पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है। और पाकिस्तान के लिए ये एक खुली चेतावनी है कि तुमने बाय एयर हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाया, तो देखो हमने तुम्हारी कितनी फैसिलिटीज तो ये जो तस्वीर है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एडमिरल सुरेश ग्रेवाल, आप भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बताएंगे। ये तस्वीर दोबारा दिखा रहे हैं हम, ये भोलारी एयरबेस की तस्वीर है, तो इसको हम फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे। पहले और बाद की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। इसका महत्व क्या, इसकी अहमियत क्या पाकिस्तान के लिए रही, देखिए इसमें मार्क किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर हमले किए गए, टारगेट एरिया कौन सा था। ये जो है वो शाहबाज एयरबेस है, जैकबाबाद पाकिस्तान, और भोलारी एयरबेस जो है उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिसमें टारगेट एरिया भी दिख रहा है और ये दिख रहा है कि हमला कहाँ पर हुआ। भोलारी एयरबेस की तस्वीर में फ्रंट एप्रन का मलबा, छत को नुकसान हुआ है, जिस जगह पे नुकसान हुआ है वो एरो करके दिखाया हुआ है, और जहाँ पर टारगेट एरिया था वो दिखाया हुआ है। एडमिरल सुरेश ग्रेवाल, तस्वीरों के बारे में बताइएगा और इंपॉर्टेंस बताइए इस जगह की, भोलारी एयरबेस की पाकिस्तान के लिए। ये भोलारी एयरबेस जो है ये नेवी, उनकी नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए, ये दक्षिण में है। और जिस तरह से इसमें नुकसान दिखाया गया है, इससे मालूम होता है कि सिर्फ छत नहीं फटी है, एक्चुअल एक्सप्लोजन नीचे जाने के बाद हुआ है, उससे साइड में जो नुकसान है वो दिखाई दे रहा है। तो इस हैंगर या एप्रन के अंदर जो कुछ भी था वो ध्वस्त हो गया होगा और कुछ नहीं बचा होगा। ये दिखाता है कि हमारी क्षमता कैसी है कि पिन पॉइंट फ्रॉम टॉप अटैक करो और नीचे तक ध्वस्त कर दो। इसके अलावा बहावलपुर में जो जैश का ट्रेनिंग कैंप था उसे भी बर्बाद किया गया है, और मुरीदके में जो कैंप्स थे उसे बर्बाद किया गया है, उसकी भी तस्वीरें बल्कि दिखाई हैं। ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भोलारी एयरबेस और उसके अलावा जो शाहबाज एयरबेस है उसके अलावा बहावलपुर और मुरीदके की भी तस्वीरें दिखाई गई हैं, जहाँ जहाँ जिन 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। तो इसमें अगर आप हमें और बताना चाहें आलोक बंसल जी कि क्या यहाँ पर दिखता है कि किस तरह से हमने प्रिसिशन हमले करके ये टारगेट अचीव किया है। ये देखिए, ये भी तस्वीर में बिफोर और आफ्टर अटैक समझ में लोगों को आ रहा होगा कि क्या हुआ है। देखिए, जहाँ तक सवाल, ये बहावलपुर की तस्वीर बहावलपुर का है। बहावलपुर जो है जैश ए मोहम्मद का गढ़ था, और जो पाकिस्तानी मीडिया से आप रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें भी आ रहा है कि वहाँ किस तरीके के ब्लास्ट हुए, किस तरीके से लोग घायल हुए और किस तरीके से लोगों में पैनिक फैला। उसके अलावा जो आपने जैकोबाबाद और भोलारी दिखाया, ये दोनों सिंधु नदी के उस पार हैं।
ये काफ़ी डीप स्ट्राइक्स, अगर आप देखें जैकोबाबाद जो है उत्तरी सिंध में करीब करीब बलूचिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, ये बहुत ही अंदर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, साफ दिखाता है कि कितनी अंदर तक हमला हुआ है जैकोबाबाद। इसी तरीके से जो भोलारी में आपने हमला किया, ये बिल्कुल कराची के उत्तर में है, ये भी सिंधु नदी के दूसरी साइड है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण एयर बेसेस हैं और ये दिखलाता है कि भारतीय वायुसेना की कितनी दूरी तक पहुंच थी और हम कितनी दूर तक हमला कर सकते थे, हमारी मिसाइल्स कितनी दूर तक जा सकती थी और कितनी प्रिसीशन के साथ हमने हमला किया। क्योंकि जब आप इतनी दूर हमला करते हैं तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता गलत हो जाए, लेकिन हमारे इस केस में हमने दिखाया कि हमारी जो शस्त्र प्रणालियां हैं वो कितनी एक्यूरेट हैं, उन्होंने कितनी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे हमला किया। जी मैं इस वक्त इन तस्वीरों को दिखा रही हूँ बार बार कि ये जो हमले हुए हैं, क्योंकि ये सबूत दिखाई देते हैं कि यहाँ पर किस तरह का हमला हुआ है और पहले क्या था और बाद में क्या था। ये जो हम देख रहे हैं वो मुरीद के में जो हमला किया गया है, हमले के पहले हमले के बाद की तस्वीर है। अब मैं वापस आऊँगी कि हमने क्या अचीव किया, पर जेके त्रिपाठी साहब, इसको दिखाकर भारत ने बहुत क्लियरली ये बताया है सबूत के साथ कि हमने क्या किया, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पर कहीं कोई सबूत नहीं है, बल्कि उनके मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एविडेंस है। तो ये दिखाने के बाद एक बार साफ हो जाता है कि भारत ने वहाँ पर क्या कार्रवाई की और किन जगहों पर की है कार्रवाई। देखिए क्या क्या हमने अचीव किया। एक तो चीज़ हमने पाकिस्तान को पर्टिकुलरली और विश्व को दिखा दिया है कि हमारी ताकत पाकिस्तान की तुलना में कितनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हमने ये दिखा दी है कि इतनी बड़ी ताकत, जब बड़ी ताकत होने के बावजूद हम शांति चाहते हैं और हमने जब शांति का प्रस्ताव आया तो हमने स्वीकार कर लिया, हमने अननेसेसरीली युद्ध को बढ़ाया नहीं। तीसरी चीज़ जो हमने अचीव की है वो ये दिखा दिया है कि अगर कोई ये कहता है कि हम आपके बीच में मध्यस्थता करेंगे, इसकी कोशिश करेंगे, तो हम सीधे कह सकते हैं नहीं, हमारे ये दोनों देशों के बीच का मामला है, हम इसको खुद सुलझाएंगे। चौथी चीज़ जो हमने ये दिखाई है वो ये दिखाई है कि बड़ी ताकत होने के बावजूद, बड़ी ताकत होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान में कहीं भी घुस के मार सकते हैं, उसका हमने प्रदर्शन। लेकिन इसके बावजूद हमने कहीं सिविलियन या मिलिट्री इसको टारगेट नहीं करते हुए जो आतंकी कैंप्स हैं वहाँ टारगेट किया और हमेशा जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन रही है। जी, और हमने ये भी कहा है कि देखिए हम सिर्फ वहीं तक हमला करेंगे, वहीं तक जवाब देंगे जहाँ तक प्रिसीजन में होगा, जहाँ कैलकुलेटेड होगा, जहाँ प्रोपोर्शनेट होगा और जहाँ पिन पॉइंटेड होगा। ठीक है, एक बार ये जो हम फैसिलिटीज़ दिखा रहे हैं दोबारा इसको दिखाएंगे और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच अब इसके ऊपर बताना चाह रहे थे। देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं वो बहावलपुर टेरर इंफ्रा टारगेट्स बिफोर एंड आफ्टर, और बहावलपुर का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो बहावलपुर का है जैसे मोहम्मद का ये एक प्रकार से हेडक्वार्टर है। ये भी सच्चाई है, जब भारत ने हमला करना था तो आतंकवादियों को पता था कि ये एक वाइबल टारगेट हो सकता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेडक्वार्टर है वो हमारी तरफ से एक टारगेट था, मगर इन्होंने ये सोचा था कि यहाँ तो आएंगे नहीं, क्योंकि आज तक कब किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी। आपने बड़ा ओपनिंग बताया था कि यूएसए ने भी कभी इतनी हिमायत नहीं की थी कि इनके घर में घुस के आप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, चाहे मुदीर के में थे, बहावलपुर में था या सियालकोट में, जाके आप उनको नष्ट करें। आपने नष्ट किया। अब अगर आप ये देखें बहावलपुर में कि यहाँ पर जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर जो मसूद अजहर का भाई था वो भी मारा गया है और ये सच्चाई है। इसके अंदर 30 से 40 आतंकवादी मारे गए। इसके अंदर जैसे आलोक बंसल जी ने बताया था ना कि 2 जिनको हमने टारगेट किया वो सिंध के उस तरफ थे और कितने अंदर गए। बहावलपुर, अगर आलोक बंसल जी बताएं, ये बिल्कुल राजस्थान सीमा से लगता हुआ है। बहावलपुर जो है चोलिस्तान रेगिस्तान में है। बहावलपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती थी अगर आपको याद हो 47 तक, और ये करीब 100 किलोमीटर दूर है भारत की सीमा से। बहावलपुर का एक और महत्व है कि बहावलपुर में एक बहुत बड़ा इलाका, जो बहावलपुर का एयरपोर्ट है, उसमें एक्चुअली सऊदी अरेबिया का एक टर्मिनल है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया की जो रूलिंग फैमिली है उसका वहाँ पे पैलेस है, उनकी बहुत बड़ी ज़मीन है।
तो बहावलपुर एक महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है और जो कट्टरपंथी संगठन है उनका एक्चुअली गढ़ है बहावलपुर, और वहाँ पे जैश ए मोहम्मद का तो जैसे बताया कि मुख्यालय है और उस पर हमला हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम दुनिया को ये दिखाना भी चाहते थे कि हम कोई वॉर मॉन्गरर नहीं है कि हम युद्ध शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम आतंकवादी संगठनों पर हमला कर रहे हैं जो पाकिस्तान की धरती पर मौजूद हैं, पर या तो पाकिस्तान की सरकार उनके साथ है या उसकी क्षमता के बाहर है उनको हैंडल करना। और ये इस बार फिर दिखा कि पाकिस्तान की सरकार कई मायनों में उनके साथ ही कैप्टन याशिका त्यागी और एडमिरल सुरेश ग्रेवाल ये हमले करके पाकिस्तान में जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको किस तरह से कमज़ोर किया है पाकिस्तान ने। कैप्टन याशिका त्यागी, एडमिरल सुरेश ग्रेवाल, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान में? टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को झटका नहीं लगा है, ये उनके जहन में झटका लगा है। हमने वो काम किया है जो वो सोच नहीं सकते थे कभी अपने सपने में भी, और दूसरा हमने इतनी अंदर जाकर इतना सटीक हमला किया है कि आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन देखिए जो उनका लीडर था जैसे उनकी उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है, और इसने सबसे बड़ा अगर देखो तो पूरी पाकिस्तान के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसका असर पड़ा है वो है कि इनके जनाजे में किस तरह से उनकी फौज और उनके वीआईपीज आए हैं। ये दिखाता है कि कैसे पूरा आतंकी संगठन जो पाकिस्तान में है वो किस तरह से उनके सिस्टम में घुल मिल गया है। तो वो भी एक्सपोज हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी और कई बार जो वहाँ पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आपस में किस तरह का गठजोड़ है, तालमेल है। बल्कि पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की तरफ से वहाँ पर फूल चढ़ाए गए जनाजे में उस आतंकवादी के जो कि माना हुआ आतंकवादी रहा, अफगानिस्तान से आर्म स्मगलिंग में जिसका नाम रहा, उस जनाजे में भी अफसर शामिल होते हैं, अधिकारी शामिल होते हैं। तो जो साठगांठ वहाँ पर है नॉन स्टेट एक्टर्स और गवर्नमेंट की, आर्मी की, वो भी नज़र आता है यहाँ पर साफ। इसके 3 मकसद एक बार फिर आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के, जो कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के जो 3 मकसद थे उसमें पहला तो सैन्य था, और देखा हमने कि किस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मट्टी में मिलाया गया। दूसरा मकसद जो रहा वो राजनीतिक भी रहा, और तीसरा मकसद जो है वो मनोवैज्ञानिक भी रहा। तो मैं मनोवैज्ञानिक मकसद की भी अगर बात करूं, आलोक बंसल जी, इससे किस तरह का डेंट, साइकोलॉजिकल डेंट, या किस तरह मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा और क्या हासिल हुआ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मामले में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है मनोवैज्ञानिक रूप से पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत जो है रुकने वाला नहीं है। हम इतने अंदर भी आकर उन पर हमला करेंगे, और अब अगर उन्होंने आतंकवाद की कोई घटना की तो उसका जवाब उनको किस तरीके से मिलेगा। और इसके बाद अब आतंकवादी संगठन भी थोड़े चेत जाएंगे कि उनको अगर इस तरीके से करना है तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। जैसे हमने देखा मसूद अजहर रो रहा था कि मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया, तो ऐसी स्थिति होगी। साथ ही साथ जो इनकी फौज है जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देती है, उनको शरण देती है, उनको एंकरेज करती है, उसको भी एक झटका मिल गया, क्योंकि जिस टेरर हब्स से जहां से ये लॉन्च करते थे उनको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। उसमें से कई ऐसे थे जिनमें कि आईएसआई के ऑफिसर्स जो थे इनके साथ मिलकर इनको ब्रीफिंग्स वगैरह देते थे, उनको भी डिस्ट्रॉय किया है। तो सेना को भी पता चल गया कि भारत का क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज़ में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय किया, जो इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स थे वहाँ पे भी हमले हुए। तो उसके बाद अब जो है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अभाव पड़ा। साथ साथ एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से पाकिस्तान को ये भी दिख गया कि उनके साथ दुनिया की कोई भी शक्ति साथ में नहीं थी। ये भी एक बहुत लेकिन चाइना और टर्की से जैसे उनका सपोर्ट मिला, और अमेरिका की तरफ से बहुत क्लियर भारत को साथ मिला क्या? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि चीन ने इस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान के फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सिर्फ कल एक वक्तव्य आया वो आधिकारिक तौर पे, लेकिन ये कहा कि सॉवरेंटी उनकी जो है उसका हम साथ देंगे। वो जो कल जो वक्तव्य आया, और कल के वक्तव्य को हमें देखना चाहिए, क्योंकि वांगी ने अजीत डोवल जी से भी बात की और पाकिस्तान में भी इशाक दर से बात की। उन्होंने इशाक दर को कहा कि हम आपकी सॉवरेनिटी
को रेस्पेक्ट करते हैं और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। और दूसरी तरफ उन्होंने अजीत डोवल जी को कहा कि हमने पहलगाम के आतंक के हमले और हम आतंक की हर घटना का विरोध करते हैं। और वो तो चीन ने करीब करीब एक इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया। तुर्की ने जरूर एक विमान भेजा कुछ सामग्री के साथ, बट उसमें भी एर्दोगान ने बाद में रिट्रैक्ट करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, तुर्की और अजरबैजान को आप कह सकते हैं कुछ हद तक उनका जो नजरिया था वो पाकिस्तान के हित में था। अमेरिका ने, हालांकि अजरबैजान का बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ पर नहीं है, लेकिन टर्की और चीन क्या स्टैंड जो है, अजरबैजान उस लेवल पे स्ट्रेटेजिकली इतनी इंपॉर्टेंट देश भारत के नज़र में नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुर्की भी कोई बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तुर्की के अंदर ड्रोन इंडस्ट्री काफी डेवलप्ड है। अगर आप ये देखें, टर्किश ड्रोन से उड़ रहे थे। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ उसमें यूक्रेन अधिकतर तुर्की के ड्रोन्स प्रयोग कर रहा है। और पाकिस्तान ने भी टर्किश ड्रोन ही ज्यादातर पाकिस्तान ने भी टर्किश ड्रोन्स किए, और ये टर्किश ड्रोन्स काफी हद में इन्होंने इस युद्ध से पहले भी ले रखे थे। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुर्की का जो इंक्लिनेशन रहा है, विशेषकर उनके राष्ट्रपति एर्दोगान का, जब से वो सत्ता में आए हैं, वो पाकिस्तान के पक्ष में रहा है काफी हद तक जी। और इसको हमें समझना चाहिए। तो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की मैं बात कर रही हूँ, इसमें एम्बेसडर जेके त्रिपाठी आपकी भी मैं राय जानना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकली कितना नुकसान पहुंचा।